Hi, Vanchika. Good evening, sir. Good evening. अपन जहाँ पिछली बार अटके थे वो अभी तक मेरे को कुछ मिला नहीं है उस पर क्लियर करने के लिए, तो थोड़ा और देख के मैं बता दूंगा तुझे, है ना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब तो क्या अपना लास्ट चैप्टर एक जो बच रहा है वो ही करना है। लेट्स स्टार्ट विद दैट। बाकी पुराना सारी चीजें हो चुकी है ना अपनी, Yes. कुछ भी नहीं बच रहा। Okay, so last chapter, which is improvement in food resources. करें क्या? Ready? Yes. Okay. Improvement in food resources, chapter 15. Perfect. So we'll use the same pattern. Okay. Let me read and then we'll discuss. We know that all living organisms need food. Food supplies proteins, carbohydrates, fats, and vitamins and minerals, all of which we require for body development, growth, and health. Plants and animals are major sources for us of food for us. We obtain most of this food from agriculture and animal husbandry. We read in newspapers that efforts are always being made to improve production from agriculture and animal husbandry. Why is this necessary? Why we cannot make do with the current levels of production? India is a very populous country. Our population is more than 1 billion people and it is still growing. As food for this growing population, we will soon need more than quarter of a billion tons of grain every year. This can be done by farming on more land, but India is already intensively cultivated. As a result, we do not have any major scope for increasing the area of land under cultivation. Therefore, it is necessary to increase our production efficiency for both crops and livestock. Efforts to meet the food demand by increasing food production have led to some successes so far. We had we have had the Green Revolution, which we spoke about in the last chapter, which contributed to increased food grain production. We have also had the White Revolution, which has led to better and more efficient use as well as availability of milk. However, these revolutions mean that our natural resources are getting used more intensively. As a result, there are more chances of causing damage to our natural resources to the point of destroying their balance completely. Therefore, it is important that we should increase food production without degrading our environment and disturbing the balances maintaining it. Hence, there is a need for sustainable practices in agriculture and animal husbandry. Also, simply increasing grain production for storage in warehouses cannot solve the problem of malnutrition and hunger. People should have money to purchase food. Food security depends on both availability of food and access to it. The majority of our population depends on agriculture for their livelihood. Increasing the incomes of people working in agriculture is therefore necessary to combat the problem of hunger. Scientific management practices should be undertaken to obtain high yields from farms. For sustained livelihoods, one should undertake mixed farming, intercropping, integrated farming practices. For example, combine agriculture with livestock, poultry, fishery, beekeeping. The question thus becomes, how do we increase the yields of crops and livestock? क्या समझ में आया अभी तक?
सर इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके लिए लाइफ स्टॉक को भी इंक्रीज करना पड़ेगा एक्चुअली बेटर एग्रीकल्चर फैसिलिटीज के लिए हम्म और जो हंगर मैलन्यूट्रिशन जिनको होता है उनके पास इतना मनी नहीं है फूड बाय करने के लिए हाँ, तो वो मनी हमें उन तक किसी तरह फिगर आउट करना पड़ेगा. द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सेम चीज से, सेम जगह से, सेम रिसोर्सेज से हाउ डू वी गेट मोर आउटपुट, विच इज व्हाट द यील्ड इज. ओके, यील्ड का क्या मतलब हुआ? Sorry. क्या मतलब हुआ यील्ड का? एज इन वो चीज लेना हम्म yield कि जैसे कि आई वांट टू yield my time yield your time what? Does not make sense. मैं किसी को yield का मतलब देना कहीं नहीं, yield का मतलब होता है, and now this is a very important concept for you as a person also. ठीक है, the concept is important. Okay, applications are different. Application in agriculture is different, application in our usual lives is different. So the concept of yield is, with the same effort or the same resources, how do you get more done, more output? How do you get more output? Okay, so in our case, suppose if you give 2 hours a day to study science, suppose, okay, that means you're giving 2 hours a day of effort every day. And how do you increase the yield of that 2 hours? So abhi agar you are able to read or revise one chapter, how will you be able to increase that to say 2 chapters in 2 hours? Okay, or how do you make it faster? How do you improve your performance on science? Okay, can you complete uh, the difficult chapters first and the easier chapters later, and so on and so forth. ठीक है, this is where the experimentation is needed. But क्या हो रहा है, हमने amount of time या effort जो हम दे रहे हैं या resource जो हम लगा रहे हैं is the same. बट क्या करना चाह रहे हैं हम, उसी रिसोर्स में ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाट, योर हेल्थ. ओके, सो वी कांट डिग्रेड योर हेल्थ बिकॉज हम शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि हमें वो आउटपुट मिल जाए कि भाई 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ते तक अच्छा हिमांशिका ने बहुत अच्छा काम कर दिया, पूरा सब कुछ कर दिया, मतलब 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस उसने खत्म कर दिया. बट 1 महीने के बाद क्या होगा, you will start getting either headaches or your health will deteriorate, or or you may have not studied other subjects, and so all of this will imbalance and it will create longer term issues. ओके, सो वो बैलेंस रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन तो हो रही है इंक्रीज, our population is increasing, but our resources are the same. ठीक है, उतना ही जगह है हमारे पास, उतने ही लैंड है जिसके ऊपर फार्म कर सकते हैं, उतना ही पानी है, पानी तो एक्चुअली कम ही हो रहा है. ठीक है, सो हम इसको कैसे मैनेज करें, हाउ डू वी गेट द फूड दैट वी नीड to sustain this population? Okay, and for that we have to increase the yield of the resources that we currently have, and there are multiple ways to increase the yield, and that's what we'll talk about. But the most important factor in increasing the yield so far has been technology and education, actually. Two things. Okay, technology, why? Because through technology, एंड आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, बट इतना क्लियरली उसमें दिया हुआ नहीं है, सो आई एम ट्राइंग टू ब्रेक इट डाउन टू फॉर यू बिफोर हैंड सो दैट यू रियलाइज हाउ दिस इज गेटिंग क्लियर. Technology, why? Because it gives you the tools, so you are now able to
suppose earlier if a farmer was able to sow the field in a month, ठीक है, एक अकेला फार्मर है एक फील्ड को, एंड दोज फील्ड्स आर लार्ज, ओके, ऐसा नहीं कि होम गार्डन्स है जिसमें एक लग रहा, ओके, दे आर लार्ज फील्ड्स, एंड इफ अ सिंगल पर्सन इज वर्किंग ऑन दैट फील्ड, they it could take up to a month to just sow the field, right? But now if he has a tractor, which is the technology aspect, if he has a tractor, now he can sow the field in 2 days, okay, now he can sow the field in 2 days. So बाकी के जो 28 days बचे हैं उसमें कुछ और काम कर सकता है, either on the farm or off the farm, ठीक है, फार्म पे भी काम कर सकता है, या फ्री टाइम हो गया तो कहीं और जॉब ले सकता है, फैक्ट्री में काम कर सकता है, एक्स वाई जेड, एंड अर्न द इनकम फ्रॉम देयर. So that is the technology aspect, okay. The second thing is the education aspect. The education aspect is they need to know what other people have done and experimented with and learned, so that they can also apply the best practices. What that means, and that is the whole point of education. What is the whole point of education? Can you tell me? और जो अपनी सोसाइटी हो जो लिटरेट हो, जिससे बेटर थिंकिंग आइडियाज. Sorry, say that again. अपनी जो इंडियन सोसाइटी है वो लिटरेट हो और बेटर थिंकिंग आइडियाज हो, पर्सपेक्टिव उन लोगों का बेटर हो इंडियन. Okay, नहीं, but मेरे को in general पता चल. What do you think? What is your view of education for yourself, for your sister, for anyone? I'm not talking about say farmers or anything. I'm just talking about your view of education. होती क्या है एजुकेशन, या किस तरह से काम में आती है, या काम भी आती है कि नहीं आती है, आती है. हाँ. होता क्या है? Why do we need to become literate, since you use the word illiterate? क्या होता है उससे? तो जिससे बेटर अंडरस्टैंड कर सके कोई चीज को, बेटर आइडियाज यूज ले सके. Okay, better understanding, better ideas, okay. और बेटर जॉब्स हो सके. better jobs हो सके, चल ठीक है. तो अगर बेटर जॉब्स तो बेटर पे ग्रेड भी होगी. नहीं तो हम इसके लिए एजुकेट कर रहे हैं मतलब? नहीं. हाँ, तो I'm trying to get to the core. There are a lot of benefits of education, but I'm trying to get to your point of view कि अच्छा एजुकेशन की जरूरत क्या है मेरे लिए. सर एरा को चेंज करने के लिए. Okay, but how can it happen with education from today's time? अगर मेरे को era change करना है, ठीक है, if I want to change, say the next decade I want to change, how can I change it? By educating right now and educating things which are of so old. Usually old fashioned चीजें ही हम पढ़ाते हैं, especially in schools, school curriculum. तो how will that help? सर कुछ नई चीज डिस्कवर करके. See, this is where the gap is. सब लोगों को ये पता है या ये रटा दिया गया है, and okay, and I use the word ratna in the same sense as we use it in any of the chapters, कि everyone thinks or knows for that matter कि education is important, but they don't realize why. Okay, so they don't know the reasoning behind it. Now the basic thing about education is we are trying to learn from all the things that other people have done before us, so that we can progress further. That is the whole concept of education. One, ठीक है, benefit नहीं है. This is the concept. So अगर you learn something today, okay, say you go on and become say an astrophysicist, okay, you learn something about the moon or the stars or sun XYZ, you will publish a paper or write a book or maybe put up blog posts and XYZ. What are you doing? You are documenting the experiments that you've done or you've learned. How will that help humans? Because of that documentation that you've done, I know that you've done the work. I know that
I do not have to do the work again. I can use your work in my work and expand on it. आया समझ में? ठीक है, हम अभी हम रॉकेट्स बना रहे हैं. हम रॉकेट्स बना पाते जब तक हमें ग्रेविटेशन के बेसिक लॉज पता होते? नहीं होता. तो ऐसा तो नहीं है कि हम जब रॉकेट बनाने गए तभी हमने ग्रेविटेशन के लॉज बनाए. नो, those were already found and figured out by Newton by his amazing genius 200, maybe, I don't know, 200 years ago at least. And now we've been able to use them for the purposes of a rocket. आया समझ में? ठीक है. So one is to crystallize what we are learning, because every day is an experiment in a sense. ठीक है, everyone is figuring it out. So when everyone is figuring it out, they are doing experiments and they are documenting it, and then when we document it, we put it in some sort of a proper form. Okay, that's when it becomes educational. Now I can read that one thing and understand what that person, say Newton, did so many years ago. आया ये समझ में? But why is it important for us? The important for us thing is because it develops our mind. Okay, it teaches us how to think. Education is important for us to develop our thinking. Illiterate people are only governed by things around them. Okay, so if you go to a village, the only stimulus that their brain has is maybe on the radio or the TV or the people around them. Yes or no? But educated people know where they can find more information. So if I want to get a tractor, I know where to find it, or I know how to figure out, अगर मेरे पास 5 ट्रैक्टर के ऑप्शन है तो उसमें से कौन सा एक मेरे लिए important है, I can make that decision better because I am educated about the horsepower or the oiling requirement or the service charges XYZ. आया क्या ये सारी चीजें समझ में? So I'm able to think and develop my mind because of the things that I'm reading or learning. That is how it benefits us. और बाकी सारी चीजें फिर उसके by products. So if I'm able to think, now I can definitely get a better job. If I'm getting a better job, I can definitely get paid more. ठीक है? And so on and so forth. ठीक है? तो यहाँ पे काफी गड़बड़ करते हैं लोग, and actually काफी तो क्या, most people don't understand why education is needed. Anyways, let's come back to what we were studying. दो चीजें बताई थी मैंने, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन. ठीक है, एटलीस्ट 2 things that are really important for high producing yield. Technology का I gave you the example because it reduces our effort. ठीक है, it reduces or it rather makes it efficient for us to it basically allows us to use our resources efficiently. ठीक है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव होती जाती है वो हर बार यही करती है कि it allows us to use our resources efficiently. Education on the other hand helps us to know what can be done, what other people have done, and what I can do better. ठीक है, or how I can use that technology better. ठीक है, and actually education is more important than technology. I cannot use the technology efficiently if I am not educated about it. ठीक है, पूरे दुनिया में सब जगह कंप्यूटर और मोबाइल फोन हो सकता है, बट अगर मुझे यूज करना नहीं आता उस मोबाइल फोन कंप्यूटर का, then it's a waste. And how will I know how to use it? By getting educated. ठीक है, so that's what produces and improves the yield, and we'll see some examples. And अब इसमें एजुकेशन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ होगा,
But the fact that we are reading it in a book and understanding uh, all of these things, that makes it clear how important education is even before we start working on the field. तो चाहे से हम लोगों ने, I mean, both of us have seen a farm or worked on a farm, but even if someone is there who has never seen a farm, but just because he or she is reading this chapter, will have more information before going on the farm rather than without it. Okay? So they will know better when they go on the farm rather than without it. Okay? So let's continue forward now. Improvement in crop yields. Cereals such as wheat, rice, maize, millets, and sorghum provide us carbohydrate for energy requirement. Pulses like gram which is chana, pea which is matar, black gram which is urad, green gram which is moong, pigeon pea which is arhar, lentil which is masoor provide us with protein. These are all pulses. Pulses क्या आते हैं, क्या बोलते हैं उनको हिंदी में? हिंदी में क्या बोलते हैं pulses को? दाल. Sorry? दाल. Dal, correct. ठीक है? A lot of people get confused in that. ठीक है? Pulses को they start thinking with wheat and all of these things. Okay? And oil seeds including soybean, groundnut, sesame, castor, mustard, linseed, and sunflower provide us with necessary fats. Vegetables, spices, fruits provide a range of vitamins and minerals in addition to small amounts of proteins, carbohydrates, and fats. In addition to these food crops, fodder crops like berseem, oats, or Sudan grass are raised as food for the livestock. Now, this is very interesting. Um, have you seen oats? Have you eaten oats? Do you know how much do you pay for those oats? Those oats, it's interesting because here it is, oats were used for livestock. Okay, livestock is cattle or uh, cows or buffaloes and stuff. उनको खिलाने के लिए. So obviously, if someone is giving them food, it won't be expensive, right? Usually, it will be quite cheap. But at the same time, when we get the same oats in a packaged box or a packet, we are easily paying equal to the vegetables and the fruits that we are paying anywhere else. Okay? So it is very interesting how these dynamics work. So if a farmer in village wants to have oats, and this is where also the education comes in. Okay, if a farmer is using oats, which maybe he is buying for say 20 rupees per kg, okay, and it can be that cheap because this is just fodder, 20 rupees per kg oats for a farmer. The same oats, if he had been educated, he could have actually sold for 200 or maybe even 2000 rupees per kg in the market. Okay, that is where the gap because of the lack of education lies. Okay. Now, different crops require different climatic conditions, temperature, and photoperiods for their growth and completion of their life cycle. Photoperiods are related to the duration of sunlight. Growth of plants and flowering are dependent on sunlight. As we all know, plants manufacture their food in sunlight by the process of photosynthesis. There are some crops which are grown in rainy season called Kharif season, from the month of June to October, and some of the crops are grown in winter season called the Rabi season from November to April. Paddy, soybean, pigeon pea,
maize, cotton, green gram, and black gram are kharif crops, whereas wheat, gram, peas, mustard, linseed are rabi crops. कौन सा सीजन चल रहा है अभी? अभी winter, rainy season. अभी खारिफ चल रहा है, या रेनी सीजन बट खारिफ, ठीक है. सो दीज आर द ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस, ठीक है. so ये जो सीजन्स बने हुए हैं, दे आर द ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस में, या जब हम फार्मर से बात करने जाते हैं, दे यूज दीज वर्ड्स खारिफ एंड राबी, और उसी को हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. दीज आर नॉट इंग्लिश वर्ड्स एज सच. In India, there has been a 4 times increase in the production of food grains from 1960s to 2004, with only 25% increase in the cultivable land area. How has this increase in production has been achieved? If we think of practices involved in farming, we can see that we can divide it into 3 stages. The first is the choice of seed for planting. The second is the nurturing of the crop plant. And the third is the protection of growing and harvested crops from loss. Thus, the major groups of activities for improving crop yields can be classified as crop variety improvement, crop production improvement, crop protection management. Sorry, वो clear नहीं है मेरी book में. So, crop protection management. Okay. क्या क्या कर रहे हैं ये? सॉरी, क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्रॉप को पहले तो ये क्लियर कर, डू यू नो किस चीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम? तो फिर और वो वीड्स और उनसे हाँ, ठीक है. फर्टिलाइजर्स वो डालते हैं ना. हाँ, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब इसीलिए डालते हैं हम, ठीक है. वीड्स कम करने के लिए इन द फार्म. सेकंड, टू जो भी अनवांटेड इंसेक्ट्स हैं उनको हटाने के लिए, या अनवांटेड पेस्ट बोलते हैं उनको, सो उनको हटाने के लिए, ठीक है. दोज आर फॉर पेस्टिसाइड्स. सो जैसे अभी बीच में अभी अपना लोकस्ट आया था, राइट? डिड यू सी दैट? डिड यू सी इट एक्चुअली? अच्छा, it was magnificent. Okay, so we were going to a village actually, and on the road, right on the outskirts of Jaipur, literally, like we were hardly like 2 kilometers outside Jaipur, and there was this huge swarm of, I mean, first we thought from afar it looked like a sandstorm, that there's like sand moving in the air, okay, because it was very slow, and it looked like random patterns of brown color. But as we went closer, there were these like flying things that came popping up on our windscreen, okay. And so we found out that they were locusts. Went out, saw it, and they were crazy, man. Like, they were all around, on top of us, everywhere. When we were standing, even then we had to cover our faces because they were like, they couldn't like change directions or anything. I don't know why. But yeah, so locusts are the craziest example of pests. Okay, they are pests at the end because they are kind of eating all the crops of the farms. That's why the whole kind of the Rajasthan government is behind them in a sense. Okay, so उनसे protect करने के लिए we need crop protection management. Okay, so we need to pre-plan for them. We need to think about how can we protect our crop if and when the locusts come and so on. Okay. Okay, let's go forward. Crop variety improvement. This approach depends on finding a crop variety that can give a good yield. Varieties or strains of crop can be selected by breeding for various useful characteristics such as disease resistance, response to fertilizers, product quality,
and high yield. One way of incorporating desirable characters into crop varieties is by hybridization. Hybridization refers to crossing between genetically dissimilar plants. Dissimilar, okay, not similar. This crossing may be interretial between different varieties or interspecific between two different species of the same genus or intergeneric between different genera. Did you understand this statement? Yes. ठीक है क्या 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 तीन तरीके हुए So variety, genus और genera. अरे Genera क्या होता है? तो मैंने क्या पूछा अभी स्टेटमेंट समझ में आया हाँ समझ में आ हाँ, गया सर variety, genus और genera. जीनस इज Genus तो पता है the genus. singular genus is the singular genera is the plural of the same okay so जो हमने अलग अलग क्लासिफिकेशंस में पढ़ा था the last classification was what species से ऊपर जो आता है that is the genus right तो genus के बीच में जब हम कर रहे हैं like in between two genuses that is what intergeneric is what called then अगर जीनस के अंदर की जो स्पीशीज है उनके बीच में कर रहे हैं तो हम इंटरस्पेसिफिक बोल रहे हैं एंड इंटरवेराइटल मींस डिफरेंट वेराइटीज ऑल टुगेदर ठीक है ऑफ द सेम स्पीशीज भी हो सकता है सेम स्पीशीज के अलग अलग वेराइटीज में ओके another way of improving crop is by introducing a gene that would provide the desired characteristics this results in genetically modified crops this is actually happening by the रोज की स्टेम से कुछ होता है ना क्या रोज की स्टेम को कट करके कहीं और प्लांट करते हैं no that is called grafting or layering that's a separate thing ठीक है रोज का जब हमारा स्टेम होता है उसको हम इस तरह से काटते हैं और फिर हम क्या करते हैं दूसरे प्लांट के साथ में उसको लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि मतलब उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली वो रोज ही आ जाता है बट यूजुअली से आई वांट अ पिंक रोज ओके सो आई लिटरली कलर मिक्स रोजेस सो मैंने एक वाइट रोज लिया एक रेड रोज लिया एक का मतलब स्टॉक चेंज कर दिया एंड दोनों को एक दूसरे के ऊपर लगा दिया एंड आई विल हैव अ पिंक रोज ओके सो देयर आर डिफरेंट वेज हाउ दिस इज डन ओके मतलब बट इट इज पॉसिबल बट ये जो यहाँ पे बोल रखा है दिस इज वेरी डिफरेंट हियर दे आर सेइंग कि हम जीन ही उसमें डाल देंगे so remember again recall genes were what genes were bits of information about characteristics of the plants or animals or the living object right so जैसे हमारी आईज का कलर क्या होगा वो जीन्स में सेट है हमारी कितनी हाइट होगी या will we be of average height or higher height or lower height that is all set in the genes already ठीक है to a certain extent of course now अब इसको कैसे ये लोग कर रहे हैं to get say the potatoes that we eat in chips okay now they have a very fixed type of need for example Lays or whatever Uncle Chips they want what they want big potatoes why do they want big potatoes so that they can get big slices of chips ठीक है सो वो क्या करते हैं उनको बिग पोटैटोज चाहिए जिससे कि बड़े चिप्स आ जाएं क्योंकि बड़े चिप्स सबको अच्छे लगते हैं अब द इशू इज कि बिग पोटैटोज व्हेन यू एक्चुअली ग्रो पोटैटोज कांट बी लाइक कि अच्छा हमें सब जगह बिग ही मिलेगा दे विल ऑलवेज बी लाइक डिफरेंट साइजेस राइट सो व्हाट दे डू I'm not sure if they've done it but I've heard rumors that they have they get their potatoes from genetically modified crops. So they have got crops genetically modified to get the right size of potato.
लिटरली द राइट साइज, कि भाई मेरे को इतना बड़ा चाहिए तो इतना ही बड़ा चाहिए, मेरे को इससे बड़ा नहीं चाहिए क्योंकि वो ज्यादा बड़ा हो गया, मेरे को इससे छोटा नहीं चाहिए क्योंकि वो ज्यादा छोटा हो गया. सो आई वांट दिस साइज का पोटैटो. Make a literally make a crop, because you're genetically modifying a crop, which is the crop is the potato, and you're trying to change the gene of it somehow. It could be from a better potato plant, it could be from an onion plant, whatever, and you're putting that gene in so that you get the same size of potato every single time. तो वो कैसे पता चलेगा कि वो जीन पोटैटो उसकी उतना ही साइज की होगी? नहीं, वो तो एक्सपेरिमेंटेशन से पता चलेगा कि वो उतना ही साइज का आया नहीं आया. अब इतना डिटेल में तो मैं भी कैसे बताऊंगा कि वो एग्जैक्टली वो कैसे आएगा. आई मीन जीन मॉडिफिकेशन कैसे होता है, दैट इन सेल्फ इज अ कॉम्प्लिकेटेड मैटर. सो वो कितना उसमें डालेंगे कि भाई जो भी पिगमेंट्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं वो कितना डालेंगे उस पर डिपेंड करेगा पॉसिबल. ठीक है, बट द पॉइंट इज कि दे कैन गेट द सेम शेप एंड साइज ऑलमोस्ट एवरी टाइम. ठीक है, and they do it for a lot of things. So they do it for a lot of, जैसे बनानास आते हैं. ठीक है, in the US they do it for bananas. So if you ever see the bananas in the US especially, or they always look the same, literally identical to each other. Okay, they'll be like of the same shape with almost the same brightness and so on. Okay, so the color will be similar and they would last longer. क्योंकि क्या होता है, बनाना इज अ वेरी फ्रेजाइल टाइप ऑफ फ्रूट, काफी इजीली वो खराब हो जाता है. ठीक है, तो उसमें वेस्ट काफी जाता है. सो दे वो क्या करते हैं, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं सो दैट दे उसकी लाइफ थोड़ी इलोंगेट हो जाए. सो थोड़ी क्या हो सकता है, लंबी इलोंगेट हो जाए. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट अगेन वो इतना टाइम शेल्फ लाइफ, बिकॉज इन द यूएस, इंडिया में तो अभी इतना नहीं है, सब लोग मंडी और इधर से खरीदते हैं, बट इन द यूएस मोस्टली एवरीवन गेट्स देयर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम सुपर स्टोर्स और सुपर मार्केट्स एंड व्हाट नॉट. so that means वहाँ पे उनको शेल्फ लाइफ चाहिए कि इतने टाइम तक रहेगा. ठीक है, सो दे वांटेड से कि एक बार मैंने बनाना ला के रख दिया तो एटलीस्ट 1 महीना चले वो, ऐसा नहीं हो कि 2 दिन में ही खराब हो जाए. राइट, so that's why they do it. And a lot of crops are getting done, especially in US and developed markets. A lot of crops are rumored to be genetically modified. In India I'm not so sure, but I'm pretty sure कि कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है. तो हेल्थ बेनिफिट्स तो उतने ही रहते हैं. Not really, not really. I mean, health benefits, actually there is a dichotomy about it. There is like a difference of opinion about it कि health benefits same रहते कि नहीं रहते. But this is definitely sure कि they are not natural. So if they are not natural, then I mean intuitively थोड़ा doubt तो आता है उनके बारे में कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता. But I'm not sure because, well, I don't know if I've eaten genetically modified crops or not. इसलिए. Okay, but if you're interested, you should definitely search about and see if we are eating genetically modified crops or not. ठीक है, मैंने उसमें एक देखा था, मतलब मैंने पढ़ा था कि जो बनाना, जिसमें हाइब्रिड बनाना होते हैं, उनका जो ऊपर का जो स्टेम वाला पार्ट होता है ना, वो ग्रीन होता है, और उनका जो येलो वाला पार्ट होता है वो पूरा येलो ही होता है. जब वो ऊपर से ग्रीन होता है मतलब वो मॉडिफाइड है. sorry, what were you saying? वापस से बोलना एक बार. तो बनाना का जो ऊपर स्टेम वाला पार्ट होता है ना, हाँ, वो अगर ग्रीन होता है मतलब वो मॉडिफाइड है, और अगर बनाना येलो है तो वो मॉडिफाइड होता है. जो अच्छा. सिर्फ जो ऊपर से राइप होता है ना, तो अगर ऊपर से ग्रीन है और नीचे से येलो है तो वो कैसे राइप हो, वो हाइब्रिड बनाना. हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर से अगर राइप हो गया तो वो टूट जाएगा फिर, इसलिए शायद. ऊपर से ब्राउनिश कलर आता है उसका अगर प्रॉपर्ली राइप हो. Nice.
हाँ तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं यार, काफी सारे होते हैं ऐसे, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड हिमांशु। ओके, या सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, लेट्स गो फॉरवर्ड। Yes. For new, okay, so for new varieties of crops to be accepted, it is necessary that the variety produces high yields under different conditions that are found in different areas. Farmers would need to be provided with good quality seeds of a particular variety. That is, the seeds should all be of the same variety and germinate under the same conditions. Okay. Cultivation practices and crop yield are related to weather, soil quality, and availability of water. These are the three main things. Okay, weather, quality of soil, and availability of water. Since weather conditions such as drought and flood situations are unpredictable, varieties that can be grown in diverse climatic conditions are useful. Similarly, varieties tolerant to high soil salinity have been developed. High soil salinity मतलब Soil जिसमें ने ज्यादा, मतलब salt. हाँ salt होता है. Some of the factors for which high improvement is done are, so these are basically the favorable properties that we want. Okay, उसको क्या क्या चाहिए वो बता रहे हैं. High yield होती है, so increase the productivity of crop per acre. Same acre में ज़्यादा crop निकल रहा है. Improved quality. Quality considerations of crop products vary from crop to crop. Baking quality is important in wheat, protein quality in pulses, oil quality in oil seeds, and preserving quality in fruits and vegetables. So see, preserving quality लिखा हुआ है उसमें. Preserving means कि वो खराब ना हो. ठीक है. Biotic and abiotic resistance. Crops production can go down due to biotic, which are diseases, insects, nematodes, and abiotic, which are drought, salinity, waterlogging, heat, cold, and frost stresses under different situations. Varieties that are resistant to these stresses can improve crop production. Changes in maturity duration. The shorter the duration of the crop from sowing to harvesting, the more economical is the variety. Such short durations allow farmers to grow multiple rounds of crops in a year. Short duration also reduces the cost of crop production. Uniform maturity makes the harvesting process easy and reduces losses during harvesting. क्या मतलब हुआ इसका? Uniform maturity. So जो harvesting में जो loss होता है plants का, उससे save करना है. यूनिफॉर्म मेच्योरिटी का मतलब हुआ, क्या होता है कि सपोज एक पेड़ है, ठीक है, एंड से इट्स एन एप्पल ट्री. नाउ ऐसा तो नहीं है कि हर बार सेम टाइम पे सारी एप्पल्स आ जाएंगी. नो, क्या होगा, पहले सपोज 4 एप्पल्स आए, उनको मैं तोड़ लूंगा. फिर 10 एप्पल्स आए, फिर उनको मैं तोड़ लूंगा. फिर 15 एप्पल्स आए, फिर 4 एप्पल्स आए, एंड सो ऑन. ठीक है. सो the maturity of the fruits, okay, I mean apples तो दूसरी भी दिखेंगी मुझे, बट जो mature होने का रेट है वो सेम नहीं रहेगा. कोई एप्पल्स जल्दी mature हो जाएंगे, कोई एप्पल्स बाद में mature होती है.
राइट? सो यूनिफॉर्म मेच्योरिटी मतलब कि सारे, ऑलमोस्ट सारे, जब मेरे फ्रूट्स एक साथ मेच्योर हो जाएं, तो अगर 100 एप्पल्स दिख रहे हैं मुझे एक ट्री पे और वो सारे के सारे से 10 दिन के अंदर एक साथ मेच्योर हो जाएं, दैट इज हेल्पफुल टू मी. Okay, because now I can easily pick them out and go to, I mean basically sell them directly. इसलिए ठीक है. Now this is very interesting, change in maturity duration. This is exactly what we spoke about in the last, I think last class only, about the uh, papayas and the mangoes. What are they essentially doing? They are getting the uh, basically they are getting the raw mango from the tree, उनको पैक कर देते हैं और उनके ऊपर वो पाउडर छिड़क के दे आर इंक्रीजिंग देयर और चेंजिंग देयर मेच्योरिटी रेट. तो जो मेच्योरिटी रेट से होता ऑन द ट्री, इट वुड टेक मे बी a month from green mango to yellow mango form होने में. In after they've broken it down and after the powder, it could just be few days, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, whatever. Basically transportation का वो देखते हैं कि कितनी देर में पहुंचेगा, ठीक है. So that is what I'm talking about. So a lot of people are using them, but now it's definitely harming us, ठीक है, because all of these. So again हम कैसे कर पा रहे हैं ये सब हम टेक्नोलॉजी के थ्रू कर पा रहे हैं. एंड टेक्नोलॉजी इज a double-edged sword. Okay, do you understand this concept? क्या होता है? अच्छा नहीं पता. Double-edged sword. Imagine कि एक मेरे पास इस तरीके की स्वॉर्ड है जिसमें only one side is sharp. ठीक है. Now if only one side is sharp, I can only cut the, say if it's a blade or whatever, I can cut the apple or whatever through one side. But if the other side is also sharp, what happens? The chances of me cutting myself is also increased. So double-edged sword में क्या होता है? It can both kill or hurt someone else. At the same time, it can hurt you as well. And technology is like that. ठीक है. So जो fission का हम बात करते हैं, fission जो atom bomb बनाया था, that is a way of using the same technology of fission in a destructive way, and we can also use it in a constructive way in a nuclear reactor. ठीक है. Similarly, mobile phones. अभी मतलब सब लोग मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं. इट्स अ ग्रेट communicating tool, it's a great way to search and all those things, but it is also ruining our health. It is ruining our health, our eyes, our ears, and we are also getting socially distanced, and not because of the virus but in general also we were. ठीक है. So it is also becoming a difficult thing. So same thing is happening here as well. ठीक है. So यहाँ पे कौन से टेक्नोलॉजी पर, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. टेक्नोलॉजी इज नॉट ऑलवेज अबाउट computers and internet and code and whatnot. That is not technology. Technology का मतलब क्या होता है? Something that allows us to put less effort to do the same work. So the wheel is also a technology. आएगा ये समझ में? Wheel, जो first wheel बना था, that is also a form of technology. उसे टाइम कम लगा जो वर्क करने का. Yes. पहले क्या कर रहे थे हम? ऐसा काट खींच के लेके जा रहे थे तो वो नीचे रगड़ रगड़ के जा रहा था. दैट मीन्स फ्रिक्शन ज्यादा था. फ्रिक्शन ज्यादा था तो मेरे को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा था. ज्यादा एफर्ट भी लग रहा था, टाइम भी लग रहा था. जैसे ही मैंने 4 या 2
पहिए लगा दिए, 2 wheels I put to that cart, my effort reduced and my time also reduced. ठीक है? So that is why I will still call that wheel a technology. Okay, similarly, this sword, again, a sword, a knife, they are all technologies. We don't consider them technology because for us now we only think computers or code and all of these things are technology, but they are not. They are just a fraction of technology. Rubber that we use, okay, कार के पहियों में कहीं पे भी हम जो यूज कर रहे हैं, rubber as a product is a technology. Plastic as a product, okay, is a technology. Okay. Similarly, Teflon. Have you heard of Teflon? No. सुना है क्या कभी टेफ्लॉन? टेफ्लॉन is also a technology. Teflon is used in मतलब बहुत सारे uses होते हैं, but Teflon is say हाँ, नॉन स्टिक कुकवेयर पे काम आता है. नॉन स्टिक कुकवेयर पे द होल पॉइंट ऑफ नॉन स्टिक, वो नॉन स्टिक क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके ऊपर एक टेफ्लॉन की लेयर होती है और उसकी वजह से वो स्टिक नहीं होती चीजें. ठीक है, बट इट इज यूज्ड at multiple places. Similarly, nylon. Teflon is also used in space suits, by the way. I think space suits. I'm not sure. इतना ज़्यादा मेरे को ध्यान नहीं है इसके बारे में. Nylon. These are all examples of technology. ठीक है? You see rubber in so many multiple ways. Wheels में तो देखते ही हैं हम. We also see them in shoes. Shoes. We also see them in. Elastic band. Elastic Hmm? bands. Elastic bands. Elastic. Bands. इलास्टिक बैंड्स. ओके, तो बैंड्स लिख देता हूँ बस मैं. ठीक है, प्लास्टिक हर जगह काम में आ रहा है. ठीक है, कैरी करने के लिए, पैक करने के लिए, स्टोर करने के लिए, सब जगह हमारा प्लास्टिक काम में आ रहा है. कुछ भी बनाना है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी प्लास्टिक काम में आ रहा है. टेफ्लॉन का मेरे को 100% श्योर नहीं हूँ, बट आई थिंक इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग स्पेस सूट्स एंड स्टफ. ओके. नायलॉन अगेन इट्स यूज्ड फॉर मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स. स्ट्रिंग में तो काम आता ही है. ठीक है, इट इज डेफिनेटली यूज्ड इन स्ट्रिंग्स. जो हम घर के बाहर स्ट्रिंग्स लगाते हैं, दे आर ऑफ नायलॉन. एट द सेम टाइम द सेम नायलॉन इज आल्सो यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग रोप्स. तो जो माउंटेनियर्स जो Yes. रॉक क्लाइंबिंग के लिए लेके जाते हैं, दे आर ऑल मेड ऑफ नायलॉन. ठीक है. सिमिलरली समटाइम्स आवर क्लोथ्स आल्सो हैव नायलॉन. तो उसको सिंथेटिक जब बोलते हैं, सो क्लॉथ प्लस नायलॉन का होता है, या पॉलिएस्टर प्लस समथिंग होता है. ऑल ऑफ दैट इज नायलॉन. ठीक Athletic है. clothes like that. यस, यस, एथलेटिक वेयर्स में नायलॉन होता है. दैट्स व्हाई नायलॉन इज नॉट गुड आल्सो फॉर अस. ओके, so it's not good because it does not absorb anything, it's just there. Okay, so all of these are forms of technology. Do not get confused. So that powder, अगर वो डाल रहा है वो powder को, that is a form of technology. ठीक है. The syringe and the injection and the liquid in that and all of these things are forms of technology. All the pills that we eat are forms of technology. Okay, and they are really lucrative technologies. Okay, people who have found them or made them, जिसने भी डिस्कवर किया या मेड सर्च किया, they have made millions just because they made one thing. जिसने भी एक बार रबर ढूंढा and then आप अप्लाई कर दिया मल्टीपल जगहों पे. ठीक है. सो यूज बनाया एक बार बट अप्लाई मल्टीपल जगह कर दिया and it becomes really lucrative. Okay, fine, let's come back. So change in maturity duration हो गया. Wider adaptability. Developing varieties for wider adaptability will help in stabilizing crop production under different environmental conditions. One variety can be grown under different climatic conditions in different areas.
Okay, so wider adaptability of the conditions की बात चल रही है, of the climate की बात चल रही है. Desirable agronomic characteristics. Tallness and profuse branching are desirable characters for fodder crops. Dwarfness is desired in cereals so that less nutrients are consumed by these crops. Thus, developing varieties of desired agronomic characters help in giving higher productivity. ठीक है, एग्रोनॉमिक कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ कि एग्रीकल्चर के बेसिस पे उनका कैरेक्टर चेंज हुआ. ठीक है, यूजुअली साइज, शेप, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर. फाइन. ठीक है, सो वी आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर फॉर टुडे. जितना ही हो पाएगा. नेक्स्ट टाइम भी हो गया अपना, तो नेक्स्ट अपन अगली बार ही स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो क्या काम करेगी अभी? रिसर्च. हाँ, you want to research genetically modified crops, or I had another idea for you. तो मैंने एक मूवी में देखा था कि उन लोगों ने उसका एक इंसान का डीएनए क्लोन कर लिया. Sorry? तो मैंने एक मूवी में देखा था कि एक कोई इंसान का एक साइंटिफिक लैब में कोई डीएनए क्लोन कर लिया. हाँ, वो पता नहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं यार. वो कोई मर्डर के क्राइम सीन पे डाल दिया. हाँ, डेफिनेटली पॉसिबल. काफी सारी चीजें होती हैं सर. ठीक है, सो अभी तो यही है. सर्च अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. ओके, what they are they good for us, are they bad for us, anything that you can think of. Okay, but पिछली बार जैसा डॉक्यूमेंट मत भेजना, दैट वाज अ वेरी, मतलब ऐसा लग रहा था बिल्कुल लेजी काम है. ऐसे बस सर ने बोला था तो मैंने विकिपीडिया से कॉपी करके डाल दिया. ठीक है, सर्च अ लिटिल बिट मोर. आई डोंट केयर तू कहीं से भी कॉपी करके डाल, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट दैट यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट. If you're able to explain it, that means you've actually read it and you've actually understood it. Without understanding, वो copy pasting कोई मतलब नहीं. ठीक है? I do not mind copy pasting. Okay? Unlike other teachers, it does not matter. What matters is, can you then explain it to me back? So if you can't explain it, then it's all a waste. Then the 15, 20, एक घंटा जो भी लगाया वो भी waste है. But if you can explain it, then it does not matter. The whole point is to make you explain, to make you understand. ठीक है, चल. Okay then, I'll get Maitri sir now. Thank you, sir.